Now student, today I am discussing with you problems related to time and work. Okay, time and work students, exercise 3.4. You have been doing these kind of problems right from your class 7th 8th onwards. Okay, now question is, children, Ramdin can reap a field in 30 days. Okay, the question is, what part of the field would he have reaped in 25 days? Okay, that means in 30 days Ramdin can reap means a field, one part of this field, complete field. One part means complete. Ramdeep can reap in 30 days. The question is, in 30 days Ramdin can reap what part of the field? One part. So in one day Ramdin will reap how much part? 1/30th part of the field. जब 30 days में वन पार्ट करते हैं तो वन डे में इन वन डे रामदीप विल रीप 1/30th part of the field. अब इसमें पूछा जा रहा है कि भाई what part of the field would he have reaped in 25 days? That is, in 25 days Ramdeep will reap 130 multiplied by 25. If you simplify it, you will get 5/6 part of the field. 30 days में वन पार्ट, तो 25 days में 5/6 पार्ट का रीप करेगा. ठीक है. Some questions are homework. Now question number 3. Students, A can do a job in 10 days while B can do it in 15 days. There are two persons, A and B. Okay, capacity of A to do a job is 10 days. Means A can complete a job in 10 days while another person B can complete in 15 days. If they work together, if they work together and earn 3,500, how should they share the money? I can add one more line, children. If I ask you, A can do a job in 10 days while B can do it in 15 days. If I ask you, in how many days they will complete the field if they work together? If A and B work together, find the time taken by A and B to complete the job. And next part, if they work together and earn 3,500, so how should they share the money? Children, first of all, I am going to find A's one day work. Since A complete the job in 10 days, therefore A's one day's work A will complete in one day. In one day, A will complete the work. How much work? 1/10 part of the work. Okay, and since B can do this part, another person B can do this work in 15 days. That is, in one day B's one day's work. B's one day's work is 1/15 part. क्योंकि B इसको 15 डेज में करता है तो एक दिन में करेगा इसका 1/15 पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ A एंड B इज़ वन डेज वर्क. दोनों का साथ साथ मिल के करें तो एक दिन में कितना पार्ट करते हैं? उसका 1/6 पार्ट करते हैं. A and B can do in one day. A and B complete how much work? 1/6 part of the work. That is, A and B will complete the work in 6 days. अगर A and B साथ साथ काम करेंगे तो 6 दिन में इसको पूरा करेंगे. क्योंकि एक दिन में 1/6 पार्ट करते हैं तो इस तरह से they will complete the work in 6 days. Now students, if they are having and if they work together and earn 3,500, how should they share the money? Now children, here what I am doing here, A is to B. A is one day's work, 1/10. B is one day's work, 1/15. A's one day's work is to, ratio find कर रहा हूँ, B's one day work is 1/10 is to 1/15. You make them, these are in fraction students. I want to convert these, they are in ratio. So children, by making their denominator same, okay, I can convert these to fractional ratio in their simplest form. 10 3 is 30, as 30 is their LCM. 10 3 is 30 and 15 2 is 30. 2 1 is 2. 3 is to 1. 3 is to 2 is same as 1/10 is to 1/15. Now A is one day's work
is to B's 1 day's work is equal to 3:2. Children, it means A is more efficient than B. So A is 1 day's work, एक दिन में कितना पार्ट करता है इसका? 3 पार्ट करता है, B करता है 2 पार्ट. It means A is more efficient. It means they should divide the money in the ratio. किस रेशियो में उनको पैसा डिवाइड करना चाहिए अपना मनी? 3:2 के रेशियो में. अब now they are having 3500 rupees to divide. So this is what A's ratios and this is what B's ratios. Sum of the ratio 3 plus 2 is equal to 5. So what is A's share? A's का शेयर कितना है? A का रेशियो डिवाइडेड बाई सम 5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल मनी कितना है इनके पास? 3500 है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 3 2100. A will get 2500. B शेयर रेशियो में B का पार्ट कितना है? 2. ओके, सम ऑफ द रेशियो क्या है? 5 है. 2:5 मल्टीप्लाइड बाई सम टोटल मनी 3500. 5 7 2 जा, it means B will get 1400 and A will get 2100. Okay, now question number 5. I'm taking some selected questions and rest of the questions are homework. Students, question number 5 I'm taking here. Students, A can do one fifth of a certain work in 2 days. A किसी वर्क का, किसी सर्टेन वर्क का 1/5 2 दिन में करता है. B कर रहा है उस सर्टेन वर्क का 2/3 वर्क को कर रहा है 8 डेज में. हाउ मच टाइम कैन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क? दोनों अगर साथ साथ मिलके कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, अब देखो 1/5 पार्ट ऑफ द सर्टेन वर्क, 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय ए इन हाउ मेनी डेज? 2 डेज. इट मीन्स वन पार्ट, इट मीन्स ए विल कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज. अगर ये 1/5 पार्ट 2 दिन में कर रहा है तो इस काम को कितने दिन में करेगा? एक कंप्लीट वर्क को, इस 1 पार्ट को कितने दिन में करेगा? 10 डेज में. 1 डे में 1/5, 2 डेज में 1/5. इस तरह से A will complete the work in what? 10 days. ठीक है, 1/5 पार्ट को 2 दिन में कर रहा है, 20% को 2 दिन में कर रहा है, तो इस पूरे काम को 1 कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा? 10 डेज में A. ओके, A will complete the work 1 part in 10 days. So A is 1 day. So if A complete the work in 10 days, so A is 1 day's work कितना होगा? 1/10. Means in 1 day A will do 1/10 part of the work. A will complete 1/10 part of the work. A का एक दिन का हिस्सा मैंने लगा दिया. Now 2/3 part of the work is done by B in. अब B क्या है? B is 2/3 पार्ट को कितने दिन में कर रहा है? 8 डेज में. तो B इस वर्क को कितने दिन में करेगा पूरा? 8 मल्टीप्लाइड बाई, इसको उल्टा कर देंगे आप, 3/2 हो जाएगा. ठीक है, 1 पार्ट दैट इज कंप्लीट वर्क इज डन बाय B इन हाउ मेनी डेज? 12 days. It means B takes 12 days to complete this work. If B takes 12 days to complete this work, it means what is B's 1 day? In this way, B's 1 day work is equal to 1/12 part. It means in 1 day, B will complete 1/12 part of the work. Now page number 4, children. It means A and B's 1 day's work. A is 1 day work plus B is 1 day's work. Okay. A is 1 day's work plus B is 1 day, 6 plus 5. If you take out means adding these two fractions, children, their sum is 11/60th part. By working together, A and B will do 11/60th part of the work in 1 day. A and B का साथ साथ काम करेंगे तो 11/60th पार्ट करेंगे इस काम का एक दिन में. एक दिन में इतना हिस्सा करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? इसको हम उल्टा कर देते हैं बच्चों. ठीक है, इट मीन्स A and B मतलब A plus B कैन कंप्लीट द वर्क इन, ठीक है, 60/11 डे. ओके, 60/11 डे मीन्स 5 डेज का टाइम लगाएंगे ये. क्वेश्चन नंबर 9. A and B separately do a work in 10 and 15 days.
Okay, A complete the work in 10 days while another person B complete the work in 15 days. They work together for some days. कुछ दिनों ने साथ साथ काम किया and then A completed the remaining work in 5 days. उसके बाद A ने बाकी बचे हुए हिस्से को 5 दिन में कंप्लीट 5 डेज में कंप्लीट किया है. For how many days A and B work together? ये पूछा कि भाई A and B ने कितने दिनों साथ साथ काम किया होगा. Now as per the question, A and B is 1 day's work. A is 1 day's work plus B is 1 day's work. Okay, if these two fractional numbers are added, their total is 1/6. Okay, इनको ऐड करके 1/6 आ रहा है. It means A plus B is 1 day's work. A and B is 1 day work is 1/6 part. Means 1/6 part of the work will be done by A and B in 1 day. It means A and B will complete the work in 6 days. By working together, A and B will complete the work in 6 days. Children, since A complete the work in 10 days, therefore A's 1 day work is 1/10 part. क्योंकि A इस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा था, एक दिन का काम कितना होगा इसका, एक दिन का वर्क कितना उसका 1/10 पार्ट करेगा बच्चों ये. A ने क्या किया, बाकी बचे हुए हिस्से को 5 दिन में कंप्लीट किया है. ठीक है, A इज 1 डेज वर्क 1/10. तो A इज 5 डेज वर्क कितना होगा स्टूडेंट्स, A का एक दिन का काम है 1/10, तो 5 दिन का काम कितना होगा 5/10 होगा. 5 दिन में आधा काम कर लेता है, इसका मतलब आधा काम हो चुका होगा. मीन्स A 5 days work is half work. It means A complete the remaining half work in 5 days. It means A plus B did half work. इसका मतलब A ने बाकी बचे हुए काम को, बाकी बचे हुआ काम कितना, हाफ काम है, आधा काम बचा हुआ, आधा काम हो चुका है होगा. इसका मतलब A and B ने आधा काम किया है. It means A plus B did half work. Okay, A plus B did half work. Since A plus B is 1 day work is 1/6 part. That means A plus B complete one full work in 6 days. So A plus B, A and B will complete half of the work in how many days? 6 divided by 3 days. तो A and B इस पूरे काम को, एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो A and B उस आधा काम को कितने दिन में करेंगे, 3 डेज में करेंगे. तो ये तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई for how many days A and B work together. A and B work together for 3 days. Is that okay, students? Now do remaining questions with your ones.